आर्क चुड़ैल का रहस्य, लापता बच्चे। एक रहस्यमय रात में गांव की शांति में डूबे लोग गहरी नींद में थे। यह नहीं जानते थे कि उनके आसपास खतरा मंडरा रहा है। अंधेरे में परछाइयां रेंग रही थीं और चुड़ैल के अनुयायी और उसकी लकड़बग्घे गांव की ओर बढ़ रहे थे। अपहरण की शुरुआत, चुड़ैल के अनुयायी रात के अंधेरे में घरों में चुपचाप घुस जाते, जादू का उपयोग करके खुद को छिपाते। दिन में लकड़बग्घे अचानक प्रकट होते और लोगों को डराते। वे कुछ घरों के बाहर एक चमकदार गहरे रंग का निशान छोड़ते जो उनके भूतिया शरीर से निकलता था। यह संकेत था कि उस घर में एक नवजात बच्चा है। ये लकड़बग्घे अपने असली रूप में कभी नहीं दिखते, लेकिन फिर भी पूरे गांव को दहशत में डाल देते। अगली सुबह बच्चे गायब हो जाते और चुड़ैल के अनुयायी उन्हें अपने अड्डे पर ले जाते। चुड़ैल की दुष्ट योजना, एक अंधेरे और भयानक महल के भीतर चुड़ैल उबलते हुए कड़ाह के सामने खड़ी थी। वह एक प्राचीन जादुई पुस्तक के पन्ने पलटती और दुष्टता से हंसती। इन बच्चों के आंसुओं से मैं हमेशा के लिए युवा और शक्तिशाली बन जाऊंगी, उसने ठहाका लगाया। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच जाता है। लोग इधर-उधर भागकर अपने बच्चों को खोजने लगते हैं। इसी बीच एक साहसी लड़की अपने अलौकिक दृष्टि के कारण उन अदृश्य लकड़बग्घों के निशान देख पाती है। वह उनका पीछा करते हुए चुड़ैल के घर तक पहुंच जाती है। यह देखकर वह चौंक जाती है कि गांव में ही एक महिला, जिसे सभी सामान्य मानते थे, असल में एक चुड़ैल है जो अपनी काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। लड़की जल्दी से गांव लौटकर सबको सच बताती है। इस प्रकार बचाव अभियान शुरू होता है। गांव के लोग जलती हुई मशालें लेकर चुड़ैल के ठिकाने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में जादुई जाल बिछे होते हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग को एक प्राचीन कथा याद आती है, जिसमें इन जादुई जालों को नष्ट करने का तरीका बताया गया था। आखिरकार गांव वाले महल तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्चे जादुई पिंजरों में कैद हैं। ठीक उसी समय चुड़ैल अपने अंतिम मंत्र को पढ़ने वाली होती है, लेकिन गांव वाले समय रहते उसे रोक देते हैं। वे पिंजरों को तोड़कर बच्चों को मुक्त कर देते हैं। जैसे ही चुड़ैल का जादू भंग होता है, उसकी शक्ति उसी पर पलटकर गिरती है। वह अचानक एक कमजोर और बूढ़ी औरत में बदल जाती है और उसके अनुयायी डर के मारे भाग खड़े होते हैं। खुशहाल अंत, गांव वाले अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाकर जश्न मनाते हैं। सूरज की पहली किरणें गांव में उम्मीद और एक नए सवेरे का संदेश देती हैं। गांव का बुजुर्ग कहता है, बुराई फिर से आ सकती है, लेकिन जब तक हम एकजुट हैं, ईमानदार हैं और अच्छाई के लिए खड़े हैं, हम हमेशा मजबूत बने रहेंगे। And now the story in Spanish. Follow me. El secreto oscuro de la bruja, los niños desaparecidos. En una noche misteriosa, el tranquilo pueblo dormía profundamente, sin darse cuenta del peligro que acechaba. Las sombras se deslizaban por las calles mientras los seguidores de la bruja y sus hienas se acercaban sigilosamente. El comienzo del secuestro, durante la noche, los seguidores entraban en las casas en silencio, usando magia para evitar ser detectados. Durante el día, las hienas aparecían repentinamente, aterrorizando a los aldeanos. Dejaban una marca brillante y oscura en algunas casas, una sustancia viscosa espectral que indicaba que allí vivía un bebé. Aunque las hienas nunca mostraban su verdadera forma, su mera presencia sumía al pueblo en el miedo. A la mañana siguiente, los bebés desaparecían sin dejar rastro, secuestrados por los seguidores y llevados al escondite de la bruja. El plan malvado de la bruja en un castillo oscuro y aterrador. La bruja se encontraba de pie ante un caldero hirviente. Pasaba las páginas de un antiguo libro de hechizos y sonreía con malicia. Con las lágrimas de estos niños, seré joven y poderosa para siempre, exclamó con una risa siniestra. Al amanecer, el pueblo despertó en caos al descubrir la desaparición de los niños. Todos buscaban pistas desesperadamente.
Entonces, una valiente joven, gracias a su visión especial, logró detectar las huellas invisibles de las hienas. Siguiéndolas, llegó hasta la casa de la bruja, una mujer que todos creían normal, pero que en realidad usaba sus conocimientos mágicos para el mal. La joven regresó al pueblo y reveló la verdad. Así comenzó la misión de rescate. Los aldeanos, armados con antorchas y valentía, se dirigieron al escondite de la bruja. Pero en su camino, encontraron trampas mágicas. Un anciano sabio recordó una antigua leyenda que explicaba cómo desactivarlas. Finalmente, los aldeanos llegaron al castillo y vieron a los niños atrapados en jaulas encantadas. Justo cuando la bruja estaba a punto de lanzar su hechizo final, los aldeanos irrumpieron en la sala. Rompieron las jaulas y liberaron a los niños. La magia de la bruja se volvió en su contra, absorbiendo su propia energía en lugar de fortalecerla. De repente, se convirtió en una anciana débil y sus seguidores huyeron aterrorizados. Un final feliz, los aldeanos regresaron al pueblo con los niños, celebrando su regreso. El sol salió, simbolizando la esperanza y un nuevo comienzo. El anciano sabio proclamó: el mal puede regresar, pero mientras permanezcamos unidos con fe, honestidad y amor por el bien, siempre seremos fuertes. The Story in French, enjoy and follow me. Le sombre secret de la sorcière, les enfants disparus. Par une nuit mystérieuse dans le village, un endroit paisible où tout le monde dort sans se douter du danger imminent, les ombres rampent silencieusement tandis que les disciples de la sorcière essayent approchent. C'est le début des enlèvements. Les disciples se glissent discrètement dans les maisons pendant la nuit, utilisant la magie pour éviter d'être découverts. Le jour, les hyènes surgissent soudainement, terrorisant les villageois. Elles laissent une marque lumineuse et gélatineuse de couleur sombre, secrétée par leur corps fantomatique, indiquant qu'un nourrisson se trouve dans cette maison. Bien que ces hyènes ne révèlent jamais leur véritable forme, leur présence suffit à semer la terreur. Le lendemain, dans l'obscurité, les nourrissons disparaissent, enlevés par les disciples et emmenés au repère de la sorcière. Le plan maléfique de la sorcière commence à réussir. Dans un château sombre et effrayant, la sorcière se tient devant un chaudron bouillonnant. Elle feuillette un vieux grimoire et dévoile son objectif sinistre. Avec les larmes de ses enfants, je deviendrai jeune et puissante pour toujours, dit-elle en riant. Le matin, les villageois découvrent la disparition de leurs enfants. La panique s'empare du village alors que tout le monde cherche des indices. Une jeune fille courageuse, dotée d'un don spécial qui lui permet de voir ce que les autres ne peuvent pas, découvre les traces invisibles des hyènes. En suivant ses empreintes, elle trouve la maison de la sorcière, qui cache son identité sous une apparence innocente tout en utilisant la magie à des fins maléfiques. De retour au village, elle révèle aux habitants l'emplacement des enfants enlevés. C'est alors que débute la mission de sauvetage. Un groupe de villageois, armés de torchets et de courage, se met en route vers la demeure de la sorcière. Mais sur place, ils sont confrontés à de nombreux pièges magiques. Un sage du village se souvient alors d'une ancienne légende expliquant comment les désactiver. Les villageois atteignent finalement le château et découvrent les enfants enfermés dans des cages magiques. Alors que la sorcière commence à réciter son incantation, ils interviennent juste à temps. Brisant les cages, ils libèrent les enfants. La malédiction de la sorcière se retourne contre elle, au lieu de gagner en puissance, elle perd toute sa force et redevient une vieille femme faible. Ses disciples, terrifiés, s'enfuient. Une fin heureuse. Les villageois retournent chez eux et célèbrent le retour de leurs enfants. Le soleil se lève, symbole d'un nouvel espoir et d'un nouveau départ. Un vieux sage déclare: le mal peut revenir, mais tant que nous restons unis avec foi, honnêteté et amour du bien, nous serons toujours forts.